वॉर क्रिमिनल बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान पे मुसल्लत की गई एक गैर कानूनी जंग को एक महीना हो चुका है। इस एक महीने के दौरान ईरान ने जहां अमेरिका और इजराइल को महाज जंग पे नुकसान पहुंचाया है, वहीं उसने अपने दुश्मनों का दिमागी तवाज़न भी शदीद तरीके से मुतासिर किया है। हमने हालिया दिनों में सदर ट्रंप की ज़हनी बेतरतीबी को देखा है, जो कि उनके बयानात से जाहिर होती है। वो सुबह को एक बयान देते हैं, दोपहर को दूसरा, शाम को तीसरा और रात को सोने से पहले चौथा बयान देकर खुद को मुसलसल कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये ज़हनी खलल सिर्फ ट्रंप तक ही महदूद नहीं रहा, लेकिन अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दीगर मेंबरान भी इसी दिमागी खलल का शिकार होते नजर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे वजीर खारजा मार्को रूबियो, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरन लिविट, जितना आप इनको देखते और सुनते हैं, उतना ही आप कन्विंस हो जाते हैं कि ईरानियों में अपने दुश्मनों की दिमागी तवाज़ुन को हिलाने की सलाहियत बदर्जा उतम मौजूद है। मिसाल के तौर पे मार्को रूबियो ने आज पब्लिकली आकर अपने बॉस डोनाल्ड ट्रंप को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए कहा है कि यूएस ईरान की पुरानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात कर रहा था। और फिर व्हाइट हाउस के सेक्रेटरी ने पब्लिक टीवी पे बैठकर डोनाल्ड ट्रंप की मुजरिमाना एक्शंस को जस्टिफाई करते हुए इकरार किया ईरानी हुकूमत के अराकीन और सुप्रीम लीडर का कत्ल इसलिए किया गया कि उन्होंने उसके बॉस से झूठ बोला। आज की इस वीडियो में हम इस पे मजीद बात करेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि ईरान किस तरीके से ट्रंप को ट्रोल करते हुए कुछ वेस्टर्न जर्नलिस्टों को स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में सैर करवाने लेकर गया है। तो इन सारी बातों को डिटेल में जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक जुड़े रहें। अभी तक सदर ट्रंप ने हमें यही कहा है कि ईरान पे इस जंग को मुसल्लत इसलिए किया गया है क्योंकि वो रजीम चेंज करना चाहता था। और वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि पुराने बहुत सारे जो लीडरशिप है उसको हमने असैसिनेट कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है, और जो नई रजीम है वो सदर ट्रंप को अप्रोच कर रही है पीस टॉक्स के लिए। और ये बात उन्होंने आज ही सुबह कही। इन 11 मिनट के बाद ही ट्रंप के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि उनकी हुकूमत ईरान की पुराने रजीम से बात कर रही है। Being the ones in charge, seeing if they're the ones that have the power to deliver, we're going to test it. We are hopeful that that's the case. There are clearly people there talking to us in ways that previous people in charge in Iran have not spoken to us in the past. Some of the things they're willing to do, some of the things they're saying they're willing to do. Obviously, they have to go do it. We're going to test that proposition very strongly because we always prefer to settle things through negotiation and diplomacy. But we also have to be prepared for the fact that that effort might fail, that we are dealing with a 47-year-old regime that still has a lot of people involved in it. अगर आप ये समझते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बेवकूफाना बातें हैं वो यहीं पे खत्म होती हैं, तो आप गलत हैं। इस दिन के खत्म होने से पहले ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी ने व्हाइट हाउस के अंदर पब्लिक टीवी पे बैठकर क्या कहा है वो जरा सुनिए। Process that's taking place and the ongoing negotiations. Of course, anything that they say to us privately will be tested, and we will ensure that they are being held accountable to their word. And if they are not, the president has laid out the military consequences that the Iranian regime will see if they don't hold true to the words that we are hearing privately behind the scenes. When the president says more reasonable, again, these folks are appearing more reasonable behind the scenes privately in these conversations than perhaps some of the previous leaders who are now no longer on planet Earth because they lied to the United States and they strung us along in negotiations, and that was unacceptable to the president, which is why many of the previous leaders were killed. वो बैठ के वो कह रही हैं कि इजराइल और ट्रंप ने ईरानियन लीडरशिप को और सुप्रीम लीडर को इसलिए असैसिनेट किया क्योंकि उन्होंने उनके डोनाल्ड ट्रंप के साथ झूठ बोला। यानी वो ये कहना चाह रही हैं कि जो भी कोई झूठ बोलेगा अमेरिका उसको असैसिनेट करवा देगा। इसका मतलब ये है कि अमेरिका की इस एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को
पनिश करने का एक नया निज़ाम मुतारिफ करवा। जो भी कोई झूठ बोलेगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा, या जो भी कोई झूठ बोलेगा उसको कत्ल कर देना चाहिए। आप इससे अंदाज़ा करें कि ये सारी जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इस वक़्त जो है, किस तरीके का रवैया अपनाए हुए हैं, कितना उनके लहजे में घमंड है कि वो दुनिया में किसी को भी किसी बात पे भी कत्ल करा सकते हैं और फिर पब्लिकली बैठ के उसका एतराफ़ कर सकते हैं। बहरहाल इस सारे सीन में जो ईरानी फ़ौज है, इंटरनेशनली उनका स्टेचर बड़ा है कि किस तरीके से ईरानी फ़ौज ने इस वक़्त की जो 2 मज़बूत तरीन अफ़वाज हैं, इज़राइल और अमेरिका की, उनको एक मुश्किल में डाल के रखा हुआ है। आइए ज़रा सुनते हैं बरतानिया के जो साबिक वज़ीर ख़ारिजा हैं एलन डंकन, स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए इस सारी जंग के हवाले से किस तरह के ख़यालात का इज़हार कर रहे हैं। To start with, I just was interested to hear your view broadly on the state of the oil markets at the moment, because it feels like they're at the mercy of Donald Trump's tweets to an extent. To some extent. I mean, firstly, this is the inevitable consequence of what is an utterly unnecessary conflict. And also, it may be just only the beginning. It is absolutely inevitable that you'll see a dramatic increase in oil prices, which of course then affects fertilizers and everything else as well, if you close the Strait of Hormuz. But if Donald Trump puts ground troops, for instance, on Haq Island, which is the main export terminal for Iran, not only is that an escalation and it's going to be catastrophic, but the Iranians will do two things. First, they'll just cut off that supply of oil, which adds to the problem, and they will chuck missiles to more, I think, vulnerable targets in the Gulf. And they will invoke the Houthis more in Yemen. And if you then close the Bab al-Mandeb, which is the Red Sea pinch point, you absolutely, dramatically increase the pain that all of us are suffering. You've got rationing in Bangladesh, you've got rationing in Sri Lanka, rationing in the Philippines, you've got massive food problems growing in or brewing in India. This is a catastrophe of, I would argue, primarily the Israelis making. And in terms of, actually getting things through the Strait, what are our options? Do you think it has to be a military option? Well, the idea that you can actually land troops on Iran and somehow open up a waterway is utterly illogical. No, there is not a military option, because what's different from the Iraq war is that the threats are asymmetric. You can have little skiff boats, which mini little motor torpedo boats with a little gun at the front or something, or low-level drones, which are very threatening to shipping. The ships then become uninsurable. Therefore, the oil will not flow. So the idea that you can somehow stop these risks militarily is, I think, pretty fanciful. Perhaps with an enormous navy and a massive deployment of weaponry maybe, but I don't see that. So I think this is only going to get worse unless the conflict stops. ना सिर्फ मुख्तलिफ सियासी तजिया निगार बल्कि पुराने सियासतदान, डिप्लोमेट्स, खुद अमेरिका के एक साबिक CIA ऑफिशियल ने इंटरव्यू देते हुए क्या कहा है, वो भी सुनिए। What's your assessment of this enemy, sir? Yeah, well, I mean, let me say this as a caveat up front. Nothing I'm saying should be taken as we can't win, or we have to run away, or we've been defeated. All I'm really saying is you're not going to win by underestimating your opponent and just continuing to do something in a certain way that hasn't worked so far. These guys are very tough. They're very committed. You have this whole, they are all 12ers, which means they believe we are headed for the apocalypse, which is their duty to bring on. And on the other side, they're guaranteed to win. That ought to give you pause, that they want to reap the whirlwind and believe they will win on the other side. And they are not disorganized. They are very organized, very methodical. They think many moves ahead. These are the guys that literally invented chess. So doesn't mean you can't beat them. Just means you better stop underestimating them. They are not attempting to confront the U.S. military. They are holding a knife to the world economy. The Persians are the ancient enemy, have been the ancient enemy of the West, right? Yes. It was Rome's, even more than the Germanic tribes, right, who eventually overran Rome.
and one of the reasons they overran them, the Roman Empire got bled out fighting the Persians. The Persians against the Greeks, the Persians against the Romans. They are tough hombres. And guess what? They didn't fight Athens and they didn't fight Rome because they were more Jeffersonian Democrats. They were not. And I don't think they've changed a lot. And you've layered on top of a quite dangerous apocalyptic death cult. You combine the death cult with just the Persian tenacity, etc. It's not to say we can't beat them. You can beat them. But you got to understand, if you're going to beat them, you got to beat them, right? Or come up with some way to hammer them enough to get them to the negotiating table. And we also know, Sam, correct me if I'm wrong, these are guys that they as we've known for the negotiations we try to have on all the Obama and President Trump, all these other things, they're not guys that come in and you don't get to a deal with them in the first meeting. They don't shake your hand. They're amazing. They're bureaucratic. Because of millennia, they've been bureaucratic. They have a whole way that they roll. The negotiations just go on and drag on and on, just naturally in any business deal, much less something where they're negotiating their survival or potential survival of their country, sir. Yeah, and like in any time you're negotiating with somebody in this kind of hardcore environment, it's all about leverage. Okay, right now, how are they looking at this? There's a clock ticking on the world economy in regard to what is already happening in the Straits of Hormuz. हत्ता के जो ईरानी डिस्पोरा है, जो कि अमेरिका में रह रहा है, उन्हें भी अब ट्रम्प के इस जंग के पीछे असल मकासद की कुछ समझ आने लगी है. Looking at what Donald Trump has said this morning or this afternoon now, very confident of regime change in Iran, that the Americans have been very reasonable. As an Iranian over here, how do you feel about that? Have they been reasonable? 2 points, Jane, since Donald Trump spoke on Air Force One last night, and of course this recent tweet, and that is, and we are more and more seeing the light of day, and that is perhaps this war has always been about Iran's oil. That's what he said last night. We want Iran's oil, and now we're dealing with a new, more reasonable regime. The regime we know is now held by the IRGC, the most emboldened and hardline factions. So if you ask Iranian people in Iran, they'll tell you that things are even worse because we're dealing with a younger, more rabid and more emboldened version of the regime we had. And I think that's the reality. And if Donald Trump continues to say this, that we're dealing with a new regime, quite frankly, some may say he's insulting the U.S. intelligence because we're not dealing with a new regime. And when it comes to oil, some Iranians would say, is history repeating itself? Iran's oil has long been controlled in earlier days by Russia and then the Brits. And in 1953, we both know that the United States and the British orchestrated that famous coup that overthrew Mossadegh, who wanted to nationalize Iran's oil. He was the first democratically elected prime minister. And then after that, since 1979, Iran's oil, in more ways than one, became the greatest asset for the Chinese. And the Chinese are the ones who have kept the IRGC from going bankrupt. So here we are, Donald Trump, presumably after Iran's oil. How he's going to get that, we have to wait and see. यही वजह हमें नजर आती है कि ईरानीज जो हैं वो डोनाल्ड ट्रम्प के साथ किसी भी पीस टॉक में जाने में हिचकिचाहट का शिकार है, क्योंकि दोनों के जो डिमांड्स हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं. तो समझ ये नहीं आता कि ट्रम्प और मार्को रूबियो को ये क्यों लगता है कि ईरान अपनी सुप्रीम लीडर की असैसिनेशन के बाद, अपनी मेन लीडरशिप को कत्ल करवाने के बाद, मिनाब के स्कूल की बच्चियों की शहादत के बाद और कई सैकड़ों जो सिविलियंस हैं उनके कत्ल और शहादत और इसके अलावा हजारों में जख्मी, फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें अस्पताल, स्कूल, ऑयल रिफाइनरीज, पावर प्लांट्स, इन सब पे अमेरिका ने और इजराइल ने तबाही मचाई है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका तबाह कर दिया. इस सब के बाद वो इस बात को तस्लीम कर लेगा कि वो गिव अप कर दे अपने इस एटमी प्रोग्राम को, जो कि पीसफुल है, जो कि वो जंग से पहले भी करने के लिए तैयार नहीं था. तो दूसरी तरफ ये भी लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प भी दिमागी तौर पे इस बात के लिए तैयार नहीं है, जो कि ईरान की डिमांड है कि इस जंग में उसके जो नुकसानात हुए हैं उसका अजाला किया जाए. सिवाय वो ये कर सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज
पे ईरान की जो इस वक्त कब्जा है उसको तस्लीम कर ले और खित्ते में जो उसके फौजी अड्डे हैं वहां से वो उनको रिमूव कर दे। अच्छा, पाकिस्तान इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान एक कोशिश कर रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान एक पीस डील हो जाए, जंग खत्म हो जाए, जो कि बहुत रिमार्केबल बात है, कमेंडेबल बात है, और खित्ते के बाकी अरब ममालिक भी इसमें शामिल हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान और खित्ते के दूसरे मुल्क, खास तौर पे जबकि इसहाक डार जो है वो चीन रवाना हुए हैं, हो सकता है चीन की एक पार्टिसिपेशन भी इसमें हो, तो हमें आने वाले दिनों में कुछ हालात बदलते हुए नजर आए। लेकिन इस वक्त तक की जो सिचुएशन है उसमें लग नहीं रहा कि जिस तरीके की पोजीशन ईरान की है या जो डिमांड्स ईरान की हैं और जो डिमांड्स अमेरिका की हैं, उसको देखते हुए नहीं लगता कि कोई पीस डील हो सकती है इन दोनों के बीच में और ये जंग जल्दी रुक सकती है। लेकिन जंग है, और फिर ये जंग, चूंकि ये 2 मुल्कों की या 3 मुल्कों की जंग नहीं है, इस जंग के जो इम्पैक्ट है वो एक पूरी दुनिया पे इसके इम्पैक्ट आ रहे हैं। तो गालिबन कुछ ना कुछ तो अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए, और हम जरूर अच्छे की उम्मीद रखते हैं। ट्रम्प गालिबन 2 तरह के ऑप्शन पे इस वक्त शायद गौर व फिक्र कर रहा है। नंबर 1 कि वो सब कुछ बीच में छोड़े, फतह का ऐलान करे और अपने फौजी अड्डे और अपनी मिलिट्री को इस सारी जगह, इस खित्ते से विड्रॉ करके एक पब्लिक ह्यूमिलिएशन को फेस करे। नंबर 2 जो वो सोच रहा है वो ये कि वो ईरान में बूट्स ऑन ग्राउंड करे। बूट्स ऑन ग्राउंड करने का जो ऑप्शन है, अगर वो ये अडॉप्ट करता है तो फिर अमेरिकी फौज डायरेक्टली ईरान की जो फाइटिंग कैपेबिलिटी है उसके साथ डील कर रही होंगी, और यकीनन ये एक्सपीरियंस उनके लिए अच्छा नहीं होगा। इसी बात को ईरान के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं रजा आरिफ, उन्होंने एक वार्निंग जारी की है अपने ट्वीट के जरिए, जो मैं पढ़ती हूँ आपके सामने। ट्रम्प खर्च में अपने ट्रूप भेजने का फैसला तो कर सकता है, लेकिन जब वो उन्हें वापस बुलाना चाहेगा तो ये फैसला फिर वो नहीं कर सकेगा, क्योंकि कोई भी जहन्नुम से अपने घर वापस नहीं जाता। आखिर में मैं आपको 2 छोटी छोटी वीडियोस दिखाना चाहती हूँ जो अब ये साबित करती हैं कि खित्ते के लोग किस कदर अमेरिका और इजराइल के साथ नफरत करते हैं। पहली वीडियो में इराकी बच्चे चंदा जमा कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने जो करेंसी नोट्स हैं वो ईरानी मिसाइल का एक रेप्लिका पर लगाए हुए हैं, और दूसरी वीडियो में ईरान ट्रम्प और अमेरिका को ट्रोल करते हुए वेस्टर्न जर्नलिस्टों को एक गाइडेड टूर जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का दे रहा है। "30 days into the US-Israeli war in Iran, now we are in the Strait of Hormuz in southern Iran." For decades, the Islamic Republic guaranteed the security of this strait, and countless vessels carrying oil, gas, other cargo passed here on a daily basis for the benefit of really the entire global economy. But all of that was disrupted by the American and Israeli aggressors. The strait is not closed, it has a new regulatory regime, and even the shipping finance, shipping insurance companies have accepted this regulation. It is Israel's fault now that the Strait of Hormuz is closed to ships that are unfriendly to Iran. And Iran is not just defending itself, not just defending the region, but it is potentially upending an economic world order that has served Western powers, which have served Israel. इस वीडियो के जरिए ईरान दरअसल अपने दुश्मनों को ये पैगाम दे रहा है कि वो इस समंदरी गुजरगाह पर मुकम्मल तौर पे काबिज है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। Until next time, खुदा हाफिज़।